पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी, देता असरात मनफी, तुझ में डर है आई कैन सेंस इट, left you bloody just immenses, fuck around till you come to your senses, मैं future और तू past tenses, लाजवाब you do not have the answers, तुम जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकन्स, एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका, रब लैंप क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका, वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे, दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे, who the fuck told you I was offended, मैं तो चिल और ये बीट्स पे चिल्ला रहे, fucking visionary बेटा मुझे विजन्स आ रहे, मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे, you a pussy तेरे ख्वाबों में चिचिड़े आ रहे, मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुंह चढ़ा रहे, इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहे, गला किसी प्यासे पुसी इसका सूखा ना रहे, किसी ऐरे गैरे को कोई गलत फहमी ना रहे, ये वो कैरेक्टर हैं जो कहानी में ही ना रहे, ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये मैं है सिर्फ किनारे, हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से, I'd say मेरे में गुरूर नहीं, लेकिन आजकल ऑफ रहता मूड भी, रैप गेम का आतिफ लेट पहुंचे शूट पे, लौंडे सुने मेरे गाने करें उसकी स्क्रूटनी, आई स्क्रू अकेले तेरे हुड में, हाई नाज हैं ये सारे आएंगे ना झुंड में, मैं लड़ूं अपने आप से, कॉल दैट अ विन विन, काउंट डाउन स्टार्ट तेरा करियर के दिन गिन, मेकिंग इट रेन ऑन यू लोखंड वाला रिम जिम, मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम, दे डोंट फक विद यू जैसे तुझे STD, तेरी कोई वेव नहीं है बेटा यू आर एन MP3, pull up on you like agency, sit down cause the thing gets bumpy, देता असरात मनफी, if a motherfucker gets too comfy, pull up on you like agency, जो बचा कोई शक छोटे कम सी, देता असरात मनफी, pull up on you like a Shelby, ये मथा गरम जैसे ब्लाइंडर, वो साली मांगती है फेंडी, पर मैं डेविल तो है प्राडा मेरे माइंड पर, टाइम्स अप तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ, कम वक्त लगा तेरा काउंटडाउन, कल तक बंजर पड़ा था ये साउंड क्लाउड, आजकल ग्रैम मॉडल्स मांगती हैं शाउट आउट, डाउट वाउट इनके दिए इन्हें मोड़ के, bow down I'm the king of the whole shit, आऊं जाऊं round town with the dope chick, करते थे याऊं अब नहीं वो बोलते, करता रहे ground pound बजते हैं चौक पे, दम लगा ounce तभी तो भी toxic, baby तेरी toxic, hick with a hickey, give me a blast on that sticky icky सा sticky situation तो ये घबरी है, बकचो छाप रियल बात दबरी है, it's a joke to them hip hop बिक रहा है, फेम हीरा पर वो क्लाउड पड़ी लकड़ी है, निभाया जो फर्ज हमने वो तेरा हक नहीं है, फैंस को यकीन हमें भी कोई शक नहीं है, प्यार गैसोलीन आग तो फिर लगनी है, होंगे आर पार you know ये लौंडे खतरी है, मेरा काम मारने का तूने यानी ढकनी है, लौंडे मेरे भंग वाला ग्लास तेरे यखनी है, अपने को ढंग ना लिहाज तो मुझे पड़ी में bitch I am done taking shots देना फक नहीं है, yeah जो वो खड़े इशारे पे मैं रेड लाइट, वो रो पड़े बेचारे देगा लेस लाइफ, हम जो चले सहारे ना थे लेफ्ट राइट, तुम सो रहे थे सारे but never mind, अब खास कुछ ना बोले आगे किसी के, बस घास फूके बॉय तेरा इजी है, अब नया हेड उसी के क्या है फीसेबल, अब जो मांगे चौड़े में वो सोची ना थी फिजिकल, जब हसल असल भूलें कैसे बीते कल, मैं डबल ट्रबल मुझे ना तू रीजन दे, दरअसल हम सो बिजी मेरा सीन देख, शॉट्स लेते लौंडे जो मुझ तक पहुंचाते मीम पेज, सीन टैट लाले मेरा सीन टैट, लीन बैक छोटे शबा लीन बैक, बेड़ो एक से खेले पूरी टीम टैग, तुझसे ज्यादा मशहूर हाई जोन का बीन बैक, pull up on you like agency, sit down cause the thing gets bumpy, देता असरात मनफी, if a motherfucker gets too comfy, pull up on you like agency, जो बचा कोई शक छोटे कम सी, देता असरात मनफी, if a motherfucker tryna get funky, तुझ में डर है I can sense it, साड़ी बैठक जो वैक boys can't sit, left you bloody just immenses, left you motherfucking anxious. It's your boy. Yeah. Pull up on you like agency, देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it, left you bloody just immenses, fuck around till you come to your senses, मैं future और तू past tenses, लाजवाब you do not have the answers, तुम जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकन्स, एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका, रब लैंप क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका, वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे, दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे,
Who the fuck told you I was offended? मैं तो chill और ये beats पे चिल्ला रहे Fucking visionary बेटा मुझे visions आ रहे मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे You a pussy तेरे ख्वाबों में चिड़चिड़े आ रहे मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुंह चढ़ा रहे इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहे गला किसी प्यासे पुसी इसका सूखा ना रहे किसी ऐरे गैरे को कोई गलतफहमी ना रहे ये वो कैरेक्टर हैं जो कहानी में ही ना रहे ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से I'd say मेरे में गुरूर नहीं लेकिन आजकल ऑफ रहता मूड भी रैप गेम का आतिफ लेट पहुंचे शूट पे लौंडे सुने मेरे गाने करें उसकी स्क्रूटनी आई स्क्रू अकेले तेरे हुड में हाई नाज हैं ये सारे आएंगे ना झुंड में मैं लड़ूं अपने आप से कॉल दैट अ विन विन काउंटडाउन स्टार्ट तेरा करियर के दिन गिन मेकेनिक के रेन ऑन यू लोखंड वाला रिम जिम मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम दे डोंट फक विद यू जैसे तुझे STD तेरी कोई वेव नहीं है बेटा यू आर एन MP3 pull up on you like agency Sit down cause the thing gets bumpy देता असरात मनफी If a motherfucker gets too comfy pull up on you like agency जो बचा कोई शक छोटे कम सी देता असरात मनफी Pull up on you like a Shelby ये मथा गरम जैसे ब्लाइंडर वो साली मांगती है फेंडी पर मैं डेविल तो है प्राडा मेरे माइंड पर टाइम्स अप तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ कम वक्त लगा तेरा काउंटडाउन कल तक बंजर पड़ा था ये साउंड क्लाउड आजकल ग्रैम मॉडल्स मांगती हैं शाउट आउट डाउट वाउट इनके दिए इन्हें मोड़ के bow down I'm the king of the whole shit आऊं जाऊं round town with the dope chick करते थे याऊं अब नहीं वो बोलते करता रहे ground pound बजते हैं चौक पे दम लगा ounce तभी तो भी toxic baby तेरी toxic hick with a hickey give me a blast on that sticky icky सा sticky situation तो ये घबरी है बकचोद छाप रियल बात दबरी है it's a joke to them hip hop picker आए फेम हीरा पर वो क्लाउड पड़ी लकड़ी है निभाया जो फर्ज हमने वो तेरा हक नहीं है फैंस को यकीन हमें भी कुछ शक नहीं है प्यार गैसोलीन आग तो फिर लगनी है होंगे आर पार यू नो ये लौंडे खतरी है मेरा काम मारने का तूने यानी ढकनी है लौंडे मेरे भंग वाला ग्लास तेरे यखनी है अपने को ढंग ना लिहाज तो मुझे पड़ी में bitch I am done taking shots देना fuck नहीं है yeah जो वो खड़े इशारे पे मैं रेड लाइट वो रो पड़े बेचारे देगा लेस लाइफ हम जो चले सहारे ना थे लेफ्ट राइट तुम सो रहे थे सारे but never mind अब खास कुछ ना बोले आगे किसी के बस घास फूके बॉय तेरा इजी है अब नया हेड उसी के क्या है फीसेबल अब जो मांगे चौड़े में वो सोची ना थी फिजिकल जब हसल असल भूलें कैसे बीते कल मैं डबल ट्रबल मुझे ना तू रीजन दे दरअसल हम सो बिजी मेरा सीन देख शॉट्स लेते लौंडे जो मुझ तक पहुंचाते मीम पेज सीन टैट लाले मेरा सीन टैट लीन बैक छोटे शबल लीन बैक बेड़ो एक से खेले पूरी टीम टैग तुझसे ज्यादा मशहूर हाई जोन का बीन बैक pull up on you like agency sit down cause the thing gets bumpy देता असरात मनफी if a motherfucker gets too comfy pull up on you like agency जो बचा कोई शक छोटे कम सी देता असरात मनफी if a motherfucker tryna get funky तुझ में डर है I can sense it साड़ी बैठक जो वैक boys can't sit left you bloody जैसे menses left you motherfucking anxious It's your boy. Yeah. Pull up on you like agency. देता असरात मनफी तुझ में डर है I can sense it. Left you bloody जैसे menses. Fuck around till you come to your senses. मैं future और तू past tenses. लाजवाब you do not have the answers. तुम जैसे अफगानिस्तान में Americans. एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे Who the fuck told you I was offended मैं तो chill और ये beats पे चिल्ला रहे Fucking visionary बेटा मुझे visions आ रहे मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे You a pussy तेरे ख्वाबों में चिड़चिड़े आ रहे मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुंह चढ़ा रहे इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहे गला किसी प्यासे पुसी इसका सूखा ना रहे किसी ऐरे गैरे को कोई गलतफहमी ना रहे ये वो कैरेक्टर हैं जो कहानी में ही ना रहे ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से I'd say मेरे में गुरूर नहीं लेकिन आज
आजकल ऑफ रहता मूड भी, रैप गेम का आतिफ लेट पहुंचे शूट पे, लौंडे सुने मेरे गाने करें उसकी स्क्रूटनी, आई स्क्रू अकेले तेरे हुड में, हाई नाज हैं ये सारे आएंगे ना झुंड में, मैं लड़ूं अपने आप से, कॉल दैट अ विन विन, काउंट डाउन स्टार्ट तेरा करियर के दिन गिन, मेकेनिक के रेन ऑन यू लोखंड वाला रिम जिम, मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम, दे डोंट फक विद यू जैसे तुझे एसटीडी, तेरी कोई वेव नहीं है बेटा यू आर एन MP3, pull up on you like agency, Sit down cause the thing gets bumpy, देता असरात मनफी, if a motherfucker gets too comfy, pull up on you like agency, जो बचा कोई शक छोटे कम सी, देता असरात मनफी, pull up on you like a Shelby, ये मथा गरम जैसे ब्लाइंडर, वो साली मांगती है फेंडी, पर मैं डेविल तो है प्राडा मेरे माइंड पर, टाइम्स अप तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ, कम वक्त लगा तेरा काउंटडाउन, कल तक बंजर पड़ा था ये साउंड क्लाउड, आजकल ग्रैम मॉडल्स मांगती हैं शाउट आउट, डाउट वाउट इनके दिए इन्हें मोड़ के, bow down I'm the king of the whole shit, आऊं जाऊं round town with the dope chick, करते थे याऊं अब नहीं वो बोलते, करता रहे ground pound बजते हैं चौक पे, दम लगा आऊं तभी तो भी toxic, baby तेरी toxic, hick with a hickey, give me a blast on that sticky icky सा sticky situation तो ये घबरी है, बकचो छाप रियल बात दबरी है, it's a joke to them hip hop बिकर आए, फेम हीरा पर वो क्लाउड पड़ी लकड़ी है, निभाया जो फर्ज हमने वो तेरा हक नहीं है, फैंस को यकीन हमें भी कोई शक नहीं है, प्यार गैसोलीन आग तो फिर लगनी है, होंगे आर पार यू नो ये लौंडे खतरी है, मेरा काम मारने का तूने यानी ढकनी है, लौंडे मेरे भंग वाला ग्लास तेरे यखनी है, अपने को ढंग ना लिहाज तो मुझे जेपड़ी में bitch I am done taking shots देना फक नहीं है, yeah जो वो खड़े इशारे पे मैं रेड लाइट, वो रो पड़े बेचारे देगा लेस लाइफ, हम जो चले सहारे ना थे लेफ्ट राइट, तुम सो रहे थे सारे but never mind, अब खास कुछ ना बोले आगे किसी के, बस घास फूके बॉय तेरा इजी है, I'm not here to सीखे क्या है feasible, अब जो मांगे चौड़े में वो सोची ना थी फिजिकल, जब हसल असल भूले कैसे बीते कल, मैं डबल ट्रबल मुझे ना तू रीजन दे, दरअसल हम सो बिजी मेरा सीन देख, शॉट्स लेते लौंडे जो मुझ तक अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं सारे के सारे, ठीक ठाक हो, क्या चल रहा है गाइस, आई एम रियली रोला सोरा, जो भी स्ट्रीम पर आ रहा है, वैसे तो मेरी स्ट्रीम पे कोई बहुत कम ही लोग आते होते हैं क्योंकि इतनी कोई, लेकिन जो भी स्ट्रीम पर आ रहा है यार मुझे बख्शो क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया, मैंने काफ़ी देर की स्ट्रीम ऑन की हुई थी और मैं काफ़ी लेट हो गया आने, आज हम भाई थोड़ी बूथी शुती गेम भी कर रहे हैं, गेम थोड़ा मेरे लेफ्ट हैंड पे लगा तो खुद ही मैनेज कर लो, सॉरी फॉर दैट, मैं ऐसे करके देख नहीं सकता, ठीक है क्योंकि मेरे को जैसे कि तुम लोग देख रहे हो मैंने सिस्टम पे भी देखना है, मेरे दोस्त अब्बास की कॉल आ रही है, बात ही रहे स्ट्रीम पे तो आते नहीं है बेगैरत लोग बाय द वे गाइस वेलकम बैक टू द गेम। जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोग खेल रहे हैं मर्डर इन ओरिएंट एक्सप्रेस। मर्डर हो गया था भाई उधर, काफ़ी दिनों से ये गेम खेल रहा हूँ, पिछले 2 महीने में छोड़ दी थी। हेडफोन कैसा पहले ये बता, लोशे आई लव यू। बाय द वे गाइस पिछले 2 महीने या 1 महीने पता नहीं 2 महीने 1 महीने गेम छोड़ दी थी, आधे में छोड़ दी थी। कल मैं भी जिन पड़ा, परसों सॉरी कल तो मैं स्ट्रीम पे नहीं आया, परसों मुझे जिन पड़ा कि यार स्ट्रीम दोबारा स्टार्ट करते हैं, और बताया बगैर सबको एवं स्ट्रीम स्टार्ट कर ली। अब तो इब्राहिम को भी कौन बुलाया, क्या नाम था इबाद को वो तो आ गया था पहले हिटमैन के दौरान, जाके पुरानी आप स्ट्रीम देख सकते हैं, हिटमैन एंड बियॉन्ड 2 सोल्स, वो बहुत मज़े गेम थी। तो भाई हम बेसिकली मौजूद है सिर्फ ट्रेन में, हमने बाजी वाली स्टोरी कल मुकम्मल कर दी। जिसने कल की स्टोरी देखनी है वो पुरानी स्ट्रीम पे जाकर देख सकता है। लेट्स गो बैक टू अवर गेम एंड लेट्स सी अब क्या होता है। इंटरोगेशन ऑन है, कौन है मर्डरर, कैसा है, थोड़े बहुत हमें बंदे मिले हैं सस्पेक्टेड हैं, अभी चलते हैं सो ऑन। चलो भाई अच्छा जी हमारे क्या सीन है जी, हमने इंटरोगेट करना है मिस स्मिथ को, जो भी है कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन करनी है हमने इसको कर लिया मेरे ख्याल से इंटरोगेट। अच्छा I need to interrogate her. The investigation will be coming to end. I need to find out who killed Richard. The journey of the Orient Express. Let's go. Oh, let's go, Habibis.
चल के यार देखते हैं कौन किधर कहाँ। और मेरी बूती शूती सही नज़र आ रही है, मैं ज़रा चेक चुक कर लूँ। मेरा बूता शूता ठीक नज़र आ रहा है। अगर गरीब का रूप है यार फेस के बताना, मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे ऐसे ऐसे होके बैठ जाऊँगा। कैमरा नहीं पीछे करूँगा, खुद ऐसे होके बैठ जाऊँ। अच्छा ये तो मेरा रूम है ना, बड़ा सेक्सी रूम है यार, चेक करो क्या बड़े की मज़े के रूम दिए मुझे। अच्छा मैं रूम्स चेक कर लूँ पहले सबके रूम कौन कौन से हैं। एस्केप तो पाया, ये क्या हो गया। चलो जब तक ये काला अंधेरा है तो यार सुनाओ फिर की हाल है। टिक्को ना इतनी देर क्यों लगाई इसने। मिस स्मिथ, नायरा बुरा, अदर पीपल, ये है माइकल क्लार्क है। स्मिथ कौन है इनमें से। मैक्वीन, एंड्रीना अंटोना पीरसी, नेटालिया हुबर्ड, मैरी डेबनहैम। स्मिथ कौन सा फिर। स्किमिथ किसका मत। ये रूम नंबर 105, लेट्स गो। भाई ये कौन है। I have nothing to ask them at the moment. अच्छा I should leave them alone. अच्छा इनके पास कुछ नहीं है, ये तो गप्पे मारी बेचारी अंदर बैठे। 205 बाहर, ये तो बाहर आ गया, गलत जगह नहीं जा रहा। 103 में थी ना वो, उल्टा जा रहा हूँ, मुझे उधर जाना है मेरे ख्याल से। हैं हाँ हैं, अब ये गलत तो नहीं जा रहा यार, बताओ ना यार, बताओ क्या कोई आई। रूम नंबर 107, 106, 105, 104 and 103. All that snow. Shut up. Are you familiar with the concept of entropy, Monsieur Entropy. McQueen? Oh, Mr. Poirot, I didn't see you. अन्ना Entropy? Randomness in a system or something? Yes. अन्ना वन्ना भाई नजर नहीं आया हम लोग Unpredictability. शोदे। Even the best laid गर्मी का plans से can करता go है, check astray करो जरा। thanks to जरा ऐसे something कर as लेता है, simple ये as क्या। An unexpected passenger? perhaps or snow. तो ये गप्पे मार रही थी, मैं इन बाजी के पास आया था रूम नंबर 103, वरना मैं उसको कहाँ ढूंढूं। और इधर कौन है। यहाँ तो वो आंटी थी ना, वो किधर गई है। फिर वो मुझे बंदे यहाँ नहीं मिलेंगे लगता, वहीं जाना पड़ेगा बार में। लेट्स गो टू बार। ये क्या है। अच्छा नाइस है, ब्यूटीफुल। यार इतने टाइम पहाड़ों में रहना, मैं कहता हूँ बड़ा हैवी सीन है भाई। ओरिएंट एक्सप्रेस 1883 में स्टार्ट हुई थी मेरे ख्याल से। इन द टाइम ऑफ सुल्तान अब्दुल हमीद द ऑटोमन्स। आंटी Good evening, Fräulein Schmidt. May I disturb you for आंटी a मिल moment? गई जी। You asked so politely, mein Herr, but I do not think I have a choice. I wanted to let you know that your roommate, Mademoiselle Locke, is Mademoiselle awake. Locke। Ah, yes, I'm glad to hear that. I was worried about her. Did she tell you what had happened to her? Unfortunately, she doesn't remember much, but we found a Directly जाएंगे residue of यार। a sleeping pill in her cup of tea. Since you two were alone together in your room when she drank it, who else but you could have dragged her? Must I point out I do not make the tea on this train? You should question the conductor or the kitchen staff. वो तप गई है, वो तप गई I है। know you have sleeping pills, Fräulein. I do have some. Do you think I'm the only person on this train who finds it difficult to sleep? I believe the Countess Andreni takes them. And I heard the Olsen woman thanking Mrs. Hubbard for a pill. That was aspirin. If you say so. Mademoiselle Locke could have died. Whoever drugged her must not feel any empathy for their fellow human beings, given the dose that Mademoiselle Locke ingested. She was close to death. Oh my God. What did I do? I didn't want to hurt her. Just have her sleep for a few hours while we had time. We? Time for what?
Time for what, Madame Schmidt? You think I feel nothing? Nothing? That poor little girl. Indeed, that poor little girl. Fräulein Schmidt is somehow connected to the Armstrong case. What could be the link between Miss Smith and Armstrong Fair, Princess? क्या लगता है? Yep. Yep. My little grey cells Did not let me down. Fräulein Schmidt, I have a certain reputation for sniffing out. I am not a murderer. Forgive me, but I was going to say brilliant chefs. You were the Armstrong family's cook, No. were you not? Lord. Yes. I was the cook of देख that कैसे lovely, रही है lovely छोटे तरीके से family. पता I'm चढ़ने sorry, मारे मुंह पे. but I must ask you to give me some time to Collect myself. collect myself. It wasn't supposed to be like this. My darling, my poor darling child. I will give you that time, Fräulein. You have given me much more in exchange. I must check in with my other suspects to make certain I have all the pieces of the puzzle in my possession. Let's go, guys. हमारा केस आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो रहा है. We are about to solve the Can I case. get you something, Monsieur Poirot? Everyone is so tense. An aperitif soon, Monsieur Fauchet, with pleasure, when the matter is resolved. अच्छा अभी हमने कहाँ जाना है? रेस्टोरेंट है ये. यहाँ पे कोई मिले हमें. Let's see. ये इसके साथ बैठा हुआ है काकी के साथ. You're right, Mr. Book. This dessert is delicious. I'm glad we didn't wait for dinner. I promise the entree will be superb as well. तो वह Detective इसका Locke, मुंह ऐसा you बंदा are चढ़ न recovering मारे well, I मुंह see. में. इतना उसका Yes. बूथा बड़ा है. I जैसे should be पकोड़े के helping with the समोसे जैसा. investigation. Do you know who drugged me? It is early yet for conclusions. When I return, then we shall see. Do not worry, Poirot. She is in good hands. Otaru, Freya, and yours truly are looking after her. बस ठीक है तुम लोग गप्पे मारो. मैं तो हूँ काम. कब से काम कराई जा रहे हो. कभी किसी की मशीनें साफ करो, कभी किसी का क्या करो, कभी लगेज उठा के रखो. पता नहीं क्या मल्टीटास्किंग हो रही है इधर. मैं पता नहीं अल्लाह जाने क्या हूँ. फजूल शोध पुना ये. तुम अभी तक पिटती रहो बैठ के. पिट के रोटी. अभी हम लोग बाजियाँ ढूंढे अपनी जिनसे हमने इंटरोगेट करना. कुक कौन है यार? I have nothing to ask them at the इनके moment. पास नहीं जाना. Should leave them alone. They are not our suspects. No. ये मेरा रूम है. छोड़ दो इसकी जान. बख्श दो मेरे रूम को. ओके. ये कुक उनका शेफ. Do you have more questions for me? No, not this time, Monsieur मैं McQueen. भूल ही गया हूँ यार. Not सॉरी. this time. नॉट दिस टाइम. वो कह रहे चुप कर. अभी नहीं है. बाद में करूँगा. ये तो वही है. ओके. पता नहीं उधर मुँह कर गया. अल्लाह जाने क्या देख रहा है. नहीं हमने यहाँ नहीं था ना. हम फिर गलत आ गए. हमें फिर पूरी ट्रेन से उधर कोने में जाना पड़ेगा. हम पागल हैं. हम पागल हैं यार. मैं असल में स्टोरी भूल गया. अगर मैं कंटिन्यूसली खेल रहा होता ना तो मुझे स्टोरी याद रहती है. थोड़ी सी मैं आगे पीछे हो गई है थोड़ा सा मेरे लिए. ये क्या कि टकरे मार रहा है. लो ऑटोमेटिक ही हो गया है. टेस्ला है क्या? वही उन दरवाजे खोले गप्पे मारी. दरवाज़ा बंद कर लो ना. इस बाजी को टाइम दिया है हमने. ये बाजी को अपना टाइम एडजस्ट कर ले. हम इतनी देर ढूंढते हैं और बंदों को. बकाया लोग किधर हैं? Jean, you've mixed everything up again. Oh, I can't find the coffee liqueur for tonight's dessert. Jean, you've mixed everything up again. Oh, I can't find the coffee liqueur for tonight's dessert. बार एक ही बकवास कर रही क्या? कोई नहीं है यार. सही है. मुझे लगता है हमने वापस के पास नहीं. इधर होगा शेफ. इधर शेफ होगा. ये रहा. इसके पास चलते हैं. ये रहा.
तो चीनी Not now. Not ये now. कब से डिनर I प्रिपेयर have कर a रहा है dinner to prepare. और भाई Would तू you कब से कर रहा है interrupt Michelangelo or Da Vinci? ये कब से ये प्रिपेयर कर रहा है मैं ऐसा कत्ल वतल कर दूंगा एक और मर्डर इंटरोगेट करना पड़ जाएगा फिर इस ट्रेन के ऊपर अब यहाँ कौन है यहाँ पे तो रिपेयरिंग टूल शॉप है यहाँ कौन था 301 ये रहा लॉल चलो भाई Let's start. Good evening, Michel. Am I bothering you? You seem stressed. With everything that's going on, क्या I हुआ must भाई? admit it's difficult to be relaxed. को क्या हो गया? Of course, I मेरे understand. कैमरे को क्या हो गया? मच्छी में Especially बिल्ली क्यों आ since गई we है? know that Detective Locke's tea यार was चार्जिंग खत्म हो drugged गई before it was served असल में to मैं her. आईफोन यूज कर रहा हूँ ओए लॉक कर दिया लॉक कर दिया मैंने सिस्टम Detective? असल में मैं आईफोन यूज कर रहा था यार तो थोड़ी देर के लिए अब कैमरा बगैर बूथी के बर्दाश्त करो चलो शाबाश मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से शाबाश स्ट्रीम तो करनी है ना Come now, Michel. Surely you would have taken the opportunity to search her things and found her badge. Luckily, she woke up and was finally able to tell us her story. Otaru boiled the water, Jean made the tea. I just brought it. Sir, it could have been any of this staff. Your defense is to accuse others? You have a network connection? No, unfortunately. It's just an automatic reminder to pay my rent. I always Oh, forget shut and your my mouth. landlord complains. Here, Michel had to be involved in The murder. murder. The drugged tea, his post at the end of the hall, and now यार कल से मैं I प्रॉपर know इंस्टॉल करूंगा भी why. से I मैं know बस more लगा than हुआ है one ऐसे of those people on the screen. वो तो ये है ना ये लेफ्ट पे कौन है लेफ्ट पे तो मेरे ख्याल से वो बनता है ना यहाँ उस पे पर्सन ऑन द लेफ्ट वो द पर्सन इन द मिडल ये तो वो है क्या नाम है जो शेफ थी हमारी सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं ये है मेरे ख्याल से यस ही मेरा आईफोन बंद हो गया दुबड़ापंती हो गया मुझसे राइट वाले मुझे नहीं पता इसके हुए कौन है ये अजीब से बालों वाला मैं अब तो कम मारूंगा I must admit I'm not right this time. Nice. ओके साइरस हार्डमैन पता नहीं तुक्का ही लगाया अब यही है Et voilà. थैंक यू सो मच यार जो स्ट्रीम पर आ रहा है काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना मैच वाला फेस कैम Are कह the रहा था लेकिन मेरा father आईफोन of बंद हो गया Suzanne Moreau, Daisy Armstrong's nanny. My condolences on the death of your wife. What? But my wife... Enough lies. Suzanne does not bear your name? No. Suzanne's mother and I were divorced. Suzanne kept her mother's name. My most sincere condolences, Monsieur Michel, on the deaths of Suzanne and your wife. This job, I loved them, but I was never there for them. Then a year after the divorce, Solange became ill. Suzanne took her to गाइस this यार बहुत special इंटरेस्टिंग स्टोरी है hospital बहुत in the मजा आया US. है ये इसका बाप Got निकला है that वाओ job व्हाट as अ ब्यूटीफुल Daisy's nanny. थिंग गोइंग ऑन इसकी I understand जो your बच्ची की pain. डेथ हुई थी उसकी नैनी And जो the थी उसकी वो reason बेटी थी that वो led मर you मुर to गई है drug Detective Locke. We really can't hide anything from you, can we? Many have Thank been you, foolish Joseph enough Dorical, to let's try go, and Sir keep Cardinal. the Thank you, truth Nisha. from Hercule Poirot. थैंक यू Yes, भाई I थी admit, I drugged the tea. But it was only to keep her quiet until I could... But she reacted so much to the sleeping pills. She was lucky, as are you, that she didn't die. To be frank, there is one more thing that puzzled me. But I भाईजान think बहुत I सारी चीजें understand सॉल्व हो now. रही हैं यस बहुत कुछ सॉल्व हो रहा है Mr. Harmon, Mr. Michel's boyfriend, Mr. Harmon, the future son-in-law of Mr. Michael, whatever. Monsieur Hardman was Suzanne's पता नहीं है। fiancé. Huh. I have the impression my whole life to you is an open book. Yes, Cyrus was my Whoa, daughter's yes. fiancé. I almost consider Cyrus as my own son. Of course, much more is clear now. Oh yes. I have been patient long enough.
It is time to go and see what all the commotion is next door. बस भाई बहुत सब्र कर लिया अब हमने अब हम लोग जा रहे हैं अगले दरवाजे की तरफ Monsieur Hardman, excellent. The gods who watch over detectives must have trapped you here. Why didn't they watch over me? I'm a detective too. I was talking to Michelle about a leaky faucet, and I wanted to go out, but you showed up. No need to invent some preposterous story. But really, Michelle has told me everything. You are the fiancé of Suzanne Moreau, his daughter. Oh. I see. Surely this is not a big surprise to you. No. Suzanne was the only woman I ever loved. And I failed her. We got into a spat. It was nothing, but I was too proud to apologize. We weren't speaking at all. Suzanne never really cared for that guy Noah. She would have forgiven me. If only. If only. If only. A common refrain between lovers who quarrel. भाई साहब Obviously, Pierre Michel and Fräulein Schmidt both drugged Detective Locke's tea, causing the overdose. No wonder she had so much trouble waking up. Time to report my findings to her and Book. अरे ओ छोड़ दे चलो भाई बुक के पास चलते हैं और उस आंटी के पास चलते हैं जिसने मेरा दिमाग इस गेम में तकरीबन सही तरीके से खपाई रखा है और किधर जाना सी इत्थे जाना सी चलो भाई चले 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 चलो चलो ओरिएंट एक्सप्रेस चका Drugged a passenger? On behalf of the company, I offer my apologies to you, Mademoiselle Locke. Michelle will answer बड़ा for this प्रोफेशनल बंदा है outrage. यार ये Both of them? I was pretty sure about Fräulein Schmidt, but I admit that I did not suspect the conductor. I have uncovered multiple connections with the Armstrong case. Pierre Michel is the father of Suzanne Moreau, little Daisy's nanny, and Monsieur Hardman was Suzanne's fiancé. As for Hildegard Schmidt, she was the cook of the Armstrong family. What a coincidence, don't you think? But it's incredible! What are the odds that so many people linked to that tragic affair ended up on the same train? About the same as you winning the lottery, my friend. I wasn't the officer who interviewed Fräulein Schmidt back then, so she couldn't recognize me here on the train. How could they know who I was? There were other passengers who might have. Or she may have seen you when you visited the Armstrong home. It is now clear to me that some of the clues to this elaborate plot were staged for my benefit. What did they want me to believe? Murderer got on the train and Winchoki killed Ratchet and got offended. The murderer boarded the train and Vinkovici killed Ratchet and stood on the train. The killer got on in Istanbul, killed Ratchet and got off in Belgrade. No, not good. मेरे ख्याल से फिर ये होगा या ये होगा This is wrong. फिर वो ऊपर But I'm पहले मैं never टॉप वाला far चूज from करने the लगा था truth. टॉप वाला चूज करने लगा था लेकिन नहीं यार मैंने कहा शायद तीसरा होता शायद तब दबा My के little साथ grey cells did did not not let me down क्योंकि तीसरा नंबर ठीक था हमने तीन Some नंबर clues and information collected so far could lead to a hypothesis. The murderer boarded the train in Vinkovsky, killed Ratchet, and then left the train immediately. How did you come to that possibility? Monsieur Hardman told me about a short man with a high-pitched voice who threatened Ratchet. Imagine for a moment that this man, wearing a wagon lit conductor's jacket, killed him while Michel was on the platform at Vinkovsky. This murderer then hid the conductor's jacket in Detective Locke's room, then fled before the train left. Why choose Detective Locke's room? Why, indeed. Let me re-explain from the beginning. The murder boarder train to discuss यार ये बड़ा मुश्किल काम The murder gets off the picture gets off on the train while she leaves the train. The murderer leaves a knife there while losing a jacket, but in the process
The train stops as being coached admitted mission by going on the platform. The matter gets rid of the jacket. Okay. The murder gets off the train now. The murder gets on back on the train which leaves at 12. बना रहा हूँ यार आई थिंक मैं ठीक बना रहा हूँ मुझे ही नहीं पता बनती तो यही स्टोरी है अब पता नहीं Let's see. Oh yes, yo buddy, I am the so perfect. Yeah, that was so easy. Oui, that must be it. Everything fits so well. It fits Yes, too movies. well, my friend. Movies, they're Other clues lead to a second hypothesis, much more plausible. What is the most probable hypothesis? There are several murders who escaped to win. There are several murders who wanted wretched money. There are several murders related to the Armstrong case. Okay. Okay. I'm right again. That happens to me a lot. So, we have multiple murderers, all related to the Armstrong case. The murderer from Vinkovsky was a fabrication to turn suspicion away from those on the train. They expected the investigation to be led by some small-town official who could easily be misled. Mr. Poirot? Oh, Detective Locke, forgive me. You are an obvious exception. You tracked Ratchet with the tenacity of a bloodhound. Unfortunately for the killers, they not only had you to deal with, but now they had, and I say this with all modesty, the world's greatest detective, Hercule Poirot, dropped into the midst of their meticulous planning. Multiple murderers? Multiple detectives? Poirot, please take pity on me. Who is linked to this case and who is not? My poor friend, I have gone speeding Bhai, out of the station without you. I will continue. Chalo bhai, chale. Who are the 9 people we know are connected to the Armstrong case? Natalia, Michelle, Loki, Ubad, Hardman. One, two, three, four, five, six. Okay. ये भी था मेरे ख्याल से ये था आई थिंक नहीं ये नहीं था बस यही है मैं और तो कोई नहीं है भाई हाँ ये भी है मेरे ख्याल से ये भी है ड्राइवर था ना ड्राइवर अच्छा जी अच्छा जी सॉरी यार वो एक बंदा आ गया है ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए एक और बंदा है कौन है वो ये I do not think that's the right वो answer. नहीं है वो टकला नहीं है और कौन है ये है यार ये भी था मेरे ख्याल से स्टार्टिंग नहीं 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ठीक बोले
अच्छा 1 2 ये थी यार इनमें से और कौन है? हाँ ये भी थी ना आज। No, 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 ये no, एक not थी। good. और ये भी है आई थिंक, ये भी है, ये भी रिलेटेड है। I must नहीं। admit I'm not right this time. कौन सा बंदा था यार रिलेटेड हो रहा है? ये बुड्ढी आंटी थी ओ बट हाँ ये है ना यार। Think, नहीं? Poirot, that is not a good answer. What the fuck? यार और कौन है रिलेटेड इससे? वो किधर है हमारा? हो गया मिशेल, हो गया मैक्वीन है, एडवर्ड मास्टरमैन, मैरी डेबनहैम, बहुत। I must admit I'm यार not कौन right है this यार? time. मुझे याद नहीं आ रहा। फिर ये चीनी कुत्ता हो सकता है ये। Think, Poirot, that is not a good answer. मैं भूल गया हूँ। ये तो नहीं है, ये भी ये होगा। This is wrong, but I'm never far from the truth. मैक्वीन, मास्टरमैन। No, 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 not good. मैक्वीन होगा, मैक्वीन होगा। हाँ मैक्वीन है। That was easy. केड़ा easy खट्टा हो। Fräulein Schmidt, Pierre Michel, Monsieur Hardman, and Monsieur McQueen are all linked to the Armstrong case. I also know. यार एक मिनट, डिस्कॉर्ड कौन आ रहा है जी? आ गया ब्रो, हेलो ब्रो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही यार। मुझे सर्वर पे ज्वाइन करो ना, मैं सर्वर का लिंक भेजता हूँ। सर्वर करो, इसको ऐड कैसे करना था सर्वर पे? लो ओए सेटिंग्स खुल गई हैं यार। Know that Sonia Armstrong. मेरा डिस्कॉर्ड किधर गया? गाइस यार आप लोग भी डिस्कॉर्ड पे आ जाया करो यार। अच्छी बातें नहीं होती है ना ऐसे, अच्छा नहीं लगता। लाइक अगर आप को एक बंदा कह रहा है ना डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, फिर मुनासिब नहीं लगता। ये गंदी गंदी बातें होती है, अच्छी बातें नहीं होती डिस्कॉर्ड पे। नाम क्या नाम था? इनविटेशन चला गया भाई, आ जाओ। हेलो, ये फ़ोन से आया हुआ है। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आज मेरा बुरा, सॉरी। अब बोल। हेलो आ रही हो? मेरा हुआ था इशू। सही है जी, आ गया जी डिस्कॉर्ड पे, आ गया जी डिस्कॉर्ड पे। ओके आ गया, आ रही है सही से? जी आ रही है। Sister and godmother, Countess Andreni and Princess Dragomirov साथ स्ट्रीम भी are ओपन on कर लो। this train. And finally, गाइस जो स्ट्रीम वाला Detective देखना Locke सब्सक्राइब शेयर कर discovered देना that यार। Mr. दफा हो जाओ Foscarelli इससे, क्या बकवास है। was the Armstrong chauffeur. If we add Detective Luck and Ratchet, of the 12 passengers in that coach, 9 have a connection with the Armstrong case. अबे उसे मिला के But 9 है, next, पागल हो गया बहु। or should I say, who next? It is time to summon everyone. गाया यार मुन हम खेल Everyone? रहे Even हैं Dr. मर्डर इन ओरिएंट Constantine? एक्सप्रेस। The train crew other than अगर Michel? तूने स्ट्रीम देखने की Dr. जहमत की हो तो। Constantine, yes. I will need him. But we don't यार want असल में the मेरे others जो as आई सी witnesses. है, I will see मैं that their देख duties keep them occupied elsewhere. मसला ही है। Excellent. I have always thought this moment in a case Hey, is much hey. like Rodin unveiling the thinker before a captivated audience. A work of Boss, art. वाचिंग है? Have you not वाचिंग felt काम है that यार, way, मैं एकदम से detective? स्ट्रीम पर आया हूँ No, ना। Mr. किसी को Provo. बताया ही नहीं, कुछ भी I'm नहीं किया, happy ना just लिंक to शेयर slap कर the रहा हूँ, cuffs कुछ नहीं on कर him. रहा। Well, there is some ये गेम artistry खत्म in हो that जाएगा, Very फिर as फिर well, I शेयरिंग करेंगे। ये गेम Where बस would you खत्म like करनी the है, आज unveiling, खत्म हो Poirot? जाएगी अगर मैं प्रॉपर The खेल। lounge? Perfect. थोड़ी सी Then I रहेगी। will gather Hey. all the passengers in the lounge. जल्दी करना, फिर दबाव नहीं को मत ये- सिखाओ। लाउंज में गेन करो, जल्दी करो, ड्रामे ना करो। अभी आईपैड भी लेना है, पबजी सब्जी खेलेंगे फिर हम इंशाल्लाह। सही हो गया जी।
ओ यार ब्रिज ब्रिज टूट जाए यार। ये माउस हटाओ, ये पता नहीं माउस क्यों आ रहा है मेरे को। अच्छा हेडफोन्स कैसे हैं? ओ हेडफोन बहुत लोशे हैं यार, कसम से मजा आ गया हेडफोन्स यूज करने। चस्का आ रहा है हेडफोन। सही है ना? मिल गया। मैं जरा यार कत्ल कुतल हो गया, जरा इंटरोगेशन सेशन कर लें हम, ठीक है ना? इंटरोगेट कर रहे हैं हम, बस लाउंज लूंज में आ गए हम, बस कातिल कुतल ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल से बस एंड लगी है गेम। Monsieur Book, are the train crew locked in their कल कितने बजे? 10 बजे स्ट्रीम पे फिर से? Then 9 the बजे stage is पूरे set भाई। for the लास्ट लेट हुआ था, final 9 act. बजे ऑन की थी तो 9:30 बजे स्ट्रीम पे 9 बजे थी और Ladies 9:30 and बजे ऑन की थी। gentlemen, I have gathered you together सही हो गया। in my कल फिर मुझे बता देना टाइम। reconstruction of the murder of डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर Samuel Edward डिवाइस भी Ratchet, लगा लूंगा आपके स्ट्रीम। also known as Cassetti. There is not one, हाँ जी। but two possible solutions of the crime. I shall put them both before you, and I shall ask Monsieur Book स्ट्रीम and ही देखना Dr. मुझे मजा नहीं आ रहा Constantine इसका। here to स्ट्रीम देखना judge पड़ता। which solution हाँ, is the मैं correct स्ट्रीम तुझे शेयर कर दूँ, डिस्कॉर्ड में भी देख सकता है Mr. Poirot, I am hardly qualified. Nevertheless, बात तो नहीं your होगा। assistance is बंद नहीं required. होता, फोन पे है ना, फोन पे बड़ा मसला होता है। क्या हुआ? Now, फोन पे you शो all होता है, know फोन पे the आया हुआ है ना। facts of the case. Ratchet was हाँ। found stabbed to death this morning. He was Okay. last known to be alive at 12:37 a.m. last night. अगर तू मेरा When he स्ट्रीम भी spoke देख to रहा the हो ना, wagon फिर तुझे समझ में आ conductor गया वो through क्या the रहा है असल door, में। his watch was found to be अब मैं नहीं badly देख सकता dented, मोबाइल पे। and it had देख stopped सकता है, मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर कर सकता हूँ तुझे स्ट्रीम, At- लेकिन ये कि तुझे फिर सही समझ में नहीं गाना आएगा। लगा सकते हैं नहीं? गाना ला से गाना फिर लगा- कि तूने मेरे साथ क्या नाम, मुझे आवाज़ आई ताकि मुझे क्या नाम है समझ ही ना आए, फिर चल गया रहा गेम में। मैं शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन, तो तुम गेम देख सकते हो, ठीक है? शेयर कर। बताना जब a गेम चली तो। quarter past 1. Dr. Constantine, who चल examined the रही है। body, puts the time of death as having एक second. occurred between Loading period. midnight and 2 in the चल morning. चल पड़ी। At half an hour after midnight, as you all know, चल पड़ी है the भाई। train Okay, ran okay. into a snowdrift. After that time, ठीक है? it was चल पड़ी है। impossible for Okay, bro, anyone okay. to leave the train. बस देख So, साथ। here is my first theory. The enemy, as Ratchet expected, joined the train at Vinkovsky No, watching by that, the door left open by Dog, Captain yeah. Arbuthnot वाचिंग and का चक्कर नहीं Monsieur यार, बस McQueen, who शौक had चढ़ा है, just बस आगे बात descended to उस पे the था। platform. He फेस कैम was पे था, मेरा equipped आईफोन with बंद हो a गया। wagonly jacket, which he wore over his ordinary अब ये clothes, पूरी कहानी and सुना रहा है, a शुरू में pass क्या key हुआ which क्या ना हुआ, enabled इतनी him to लंबी gain बस। access to Ratchet's compartment in Excuse me, spite sir. of the doors कातिल being कौन locked. नहीं यार, इस गेम ये Ratchet बेसिकली was एपिसोड under गेम है the ना। influence एपिसोड of गेम में आप his कुछ भी स्किप sleeping नहीं कर draft. सकते, क्योंकि This वही तो अगर man स्किप कर दोगे फिर वो stabbed गेम का him मजा ही with नहीं रहेगा। great ferocity. A dozen wounds सही से in all. GTA He चलो यार, left कहीं the मजा है। compartment through हाँ, the वो रोल प्ले communicating शुरू door करेंगे, रोल to प्ले के लिए Madame राइजन Evard's चाहिए भाई। compartment. ये सपोर्ट नहीं करता स्ट्रीमिंग के साथ। Scared me half out of my wits. The murderer सही सही मेरा thrust दिल सब the मैं भी dagger खेलूंगा he आपके had साथ, used लेकिन अब मेरा into स्ट्रीम सपोर्ट Mrs. नहीं करता ना। Hubbard's handbag in passing. Without चला तो knowing लेगा, it, लेकिन he lost a तुम खेल button सकते हो उस पे। of his चल जाएगी uniform. उस पे। Then he slipped out आपके of साथ the ही खेल सकता compartment हूँ and along the प्रीमियम लेना corridor. पड़ेगा। He put the uniform jacket into प्रीमियम कितने Detective का है Locke's राजी? suitcase to cast जे प्ले से ले suspicion लो, on her. 3500 का। And a few minutes later, 3000 dressed का in है? his हाँ, जे ordinary प्ले इतने का clothes, दे रहा है, he 3500 left the 4000 का train दे रहा है मेरे just ख्याल से। before it started off again. भाई तो मैं Using अगर the आप साथ same रहोगे तो मैं means for नहीं खेल egress, सकता। the door इकट्ठे near खेल the सकते हैं हम लोग। dining car. तो फिर क्या जरूरत है लेने की, आपके पास है जो सही। मेरे पास है ना, लेकिन तुम्हें मेरे से खेलने के लिए लेना That पड़ेगा is ना। the first hypothesis. But there's अच्छा a मेरा लेना second हर कंपलसरी बंदे है। हर We बंदे का must लेना examine the motive for the टाइम crime. है एक जगह पे लॉगिन। Why was Ratchet killed? सही है सही है। Revenge लेते हैं भाई, यार, revenge करते हैं is स्ट्रीमिंग clear. कंपलसरी। Revenge, of course. Nothing was stolen. And we know that Ratchet had made many enemies. This was a premeditated crime, meticulously planned. अभी तुमने और टेक्निक खाई जा रही है।
ये मेरे ख्याल से बहुत पहले डिस हुआ था। Since the kidnapping and death of little Daisy Armstrong, which traumatized many people close to the family. Even when the police concluded that it was Suzanne Moreau, questions remained. Detective Locke continued her investigation, as did others. They became convinced the truth lay elsewhere. We now know who the real murderer of Daisy is. इधर ही आवाज ही सही आ रही। मैंने कहा आपको आपके रिजल्ट की टेंशन होती थी या नहीं? मुझे रिजल्ट की? किस रिजल्ट की? हाँ। It is clear now that Daisy's killer was Ratchet, also known as Cassetti and Michael Pell, and how many other names. But of course, many of you have known this for a long time. It is obvious that the 12 stab wounds are not a random number. Dr. Constantine's analysis revealed that some stab wounds appear to have been caused by a right-handed attack. Others indicated the knife wielder was left-handed. Some wounds were deep. More than one fatal, yet others were not much more than mere scratches. What can explain these discrepancies? This leads us to an obvious conclusion. They are symbolic. They are symbolic. राइजन ले रहे हो फिर आप? सोन इंचन। ये डेजी की एज अब मुझे नहीं याद। मेरे ख्याल डेजी एज 12 थे। या jury in the United States, I'm not sure. No, Poirot. Daisy was 3 years old. सही है। फिर ये 12 stabs. 12! The same number as a trial jury in the United States. But not just a jury of 12 members condemning him to death, but 12 executioners as well. This self-appointed jury had meticulously planned for everything except snow. Snow. The avalanche that stopped us, as well as the presence of not one but 2 detectives on the train. They had to improvise, to hastily add clues and false leads. स्टोरी सुन के क्या करोगे? यार स्टोरी सुन के ही तो ये सारा गेम ही सारी स्टोरी पे है। अब मैंने सुना ही नहीं क्या द रेड कीमिनो, द ब्रोकन वॉच, द वेपिंग लिक्विड, द कंडक्टर जैकेट। The conductor's jacket, found in Detective Locke's suitcase, was put there only to cast suspicion upon her. The vial of vaping liquid incriminated Captain Arbuthnot. However, he had a solid alibi confirmed by Monsieur McQueen. Impossible then to suspect him. The time on Ratchet's broken watch was deliberately set to conceal the true time of the crime. This woman in a red kimono does not exist. I don't know which of the passengers it was. It does not really matter. It was just a performance, a charade to introduce another possible culprit to muddy the waters. All these false leads were intended for me. But I am Poirot. I understood the truth. We are the best. We have a train agent full of suspects. It's time to identify who the real culprits are. Let's start with Detective Locke. क्या लगता है इसने मारा होगा? मुझे लगता है मारा होगा। इंटरैक्ट करते हैं, देखते हैं मारा होगा नहीं मारा होगा इसने। Planting the conductor's jacket in her suitcase was an attempt to implicate Detective Locke, but she couldn't fake her drugged condition. Dr. Constantine can testify that the drugged tea incapacitated her for hours, and she had 2 relapses. Let us move on to Monsieur McQueen. When I told him about Cassetti,
He looked very surprised that I managed to make the connection between him and the Armstrong case. He told me, but I thought we had... I think नेक्स्ट हम गेम खेलेंगे कौन सी खेलें यार गाइस बताओ कौन सी गेम खेलें नेक्स्ट You thought you didn't leave any real clues linking the murder to the Armstrong kidnapping. Moreover, you insisted that Ratchet did not speak French when you knew I had heard a voice calling out in French that was supposed to be Ratchet. सोच रहा हूँ इसने मारा होगा Even if he must have hated his boss, that's not proof he killed him. No, although I think he was the one who put the photograph in Ratchet's room to send him a last message before he died, I cannot prove it. You took some pleasure in leaving me false clues, I think. It was quite annoying. But you told me yourself that your father was the district attorney who handled the Armstrong case. The case haunted my father. At first, he believed Suzanne Moreau had helped her boyfriend, Noah, to kidnap Daisy, even though there were questions that were not answered, and a young policewoman refused to let it go, continuing to find discrepancies. But never enough to reopen the official investigation. That policewoman sits there. Her name is Joanna Locke. Tell him how in the end my father believed you. How he resigned a job that he loved, racked with guilt that he may have let that monster go free. He died young, broken. His faith in justice broken. That's what Ratchet did to him. Thank you for your honesty, Monsieur McQueen. Your father is one more victim of the man who called himself Ratchet. Now, I will turn to Ratchet's valet, Monsieur Masterman. I know that a toothache hurts excruciatingly, but I don't think the pain would have driven Masterman so mad as to kill Ratchet. Monsieur Foscarelli was a closer target. If Masterman had murder on his mind. हाँ ना 2 महीने बीच में छोड़ दी थी मैंने मैं पहले से खेल रहा था Ratchet sensed danger close to him and naturally wanted to stay awake. You gave him sleeping pills without his knowledge. Once he was sound asleep, you could do what you had to do. I'll tell you the truth. I was Colonel Armstrong's adjutant in the war, sir. And afterwards, I was his valet in New York. I'm afraid that I concealed the fact this morning. It was very wrong of me, sir, but I knew how suspicious it would look. Is that all you have to say? That's all, sir. Now, to leave no suspicious stone unturned, let us move on to Monsieur Book. What? Me? A suspicious stone? क्या पता इसने मारा हो Come now, Poirot. Book will have a heart attack if you're not careful. क्या बुक को हार्ट अटैक आ जाएगा Book, my friend, of course you are not guilty. You did everything you could to get me on this train. What madness would cause you to ensure, and I speak with all modesty, that the best detective in the world could be present to witness your crime? But doesn't our friendship count as well? Most assuredly, but a murderer can wear all sorts of masks, including friendship. Let us consider our ever-efficient wagon-lit conductor, Pierre Michel. Your admission that you drugged Detective Locke immediately incriminates you, but the murder could not have been possible without your very capable assistance. Your knowledge of train procedures
made the murder possible, and your position in the गाइस corridor बस of हमारी the गेम train एंड लगी हुई है allowed गेम खत्म हो you to be फिर the हम लोग ने perfect शुरू alibi करेंगे for कल से कुछ several नहीं मिले गेम पर passengers. कोई डाउनलोड And साउनलोड भी your करनी पड़ेगी रात को मुझे तभी मैं कर सकता हूँ अदरवाइज नहीं खेल सकूंगा Daisy मेरा दिल Armstrong's करता है poor हॉगवर्ट्स nanny, लेगेसी who was बहुत मजे wrongly की लगी है मुझे accused and committed suicide, was your daughter. C'est un foiré. He Dream got what he Brooklyn, deserved. Sunday. My poor daughter has finally been avenged. My Suzanne. My child. क्या बोल Let's रहे हो मुझे move आवाज on नहीं आ now रही to Monsieur Hardman, one of Stream रुक रही है, three stream. detectives on this train. स्ट्रीम तो चल रही है तेरी वो रुक रही है कि तेरे पास जो रिकॉर्डिंग गई हुई है वो जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो रुक रही है अच्छा अच्छा स्ट्रीम मैंने खोली के साथ सही है सही Monsieur Hardman, I think you are a real detective, but you were never hired by Ratchet. Your alibi was that you were watching the corridor to protect Ratchet, which, of course, you never did. You That's right, Mr. अच्छा Poirot. अच्छा I do have some detective skills. I never doubted it. ऐसा पेंजू डिवाइस है पबजी के लिए Now, नहीं Fraulein Schmidt, the lady's maid with the soul of the cook. Fraulein Schmidt, you told me of your remorse for drugging Detective Locke. I believe you are sincere. However, Yes, as yes, the क्यों रही है cook सब पता of नहीं the मिला दे बैठी Armstrong हुई है family, you experienced the drama from within. The death of Daisy, then Sonia क्या Armstrong, एल्ड्रिक who died क्या in है ये क्या childbirth, मतलब and finally लड़की Suzanne and John Armstrong. So much misfortune in that poor family. The death of this criminal is only justice. Okay. Let us move on to Countess Andreni. I was impressed by the earnestness of her husband when he swore to me solemnly on his honor that his wife never left her compartment that night. Should I believe it? Even if it seems logical, it's more complicated than that. I believe Countess Andreni. ठीक है फिर नहीं मारा इसने यार बच गई है On the contrary, ओहो this fact gives भाई her मैंने a डबल एंटर दब motive गया for murder. Countess Andreni, being Sonia Armstrong's sister, you had every reason in the world to want to avenge her. But you were incapable of stabbing someone, even after what he had done to you and your family. The night of the crime, you simply took a sleeping pill. I appreciate the irony that nearby, Detective Locke was also in a drugged sleep. When you awoke, you thought the nightmare was over. Hush, my love. Hush. Excellent transition. I was coming to you, Count Andreni. पाया अब कुछ पता लगा हमारा 12 people, a jury. This was चलो very भाई important to all of you. इसने If replace किया मेरे Countess को Andreni did not stab Ratchet, someone had to take her place. And you, Count, the beloved husband. I've seen how fiercely you love and protect your wife. Enough! I would do anything for Helena. Anything. Even that. Yes, even that. Let's move on to Monsieur Foscarelli. इसने मारा होगा ये उसका ड्राइवर था आर्मस्ट्रॉन्ग का He's Italian, Miss Locke. Detective Locke found out that you were the Armstrong chauffeur and that you planned to travel on the same train at the same time as Ratchet. That is what made her decide to obtain a ticket as well. Unfortunately, she could not prevent the murder. Have you lost your tongue, Mr. Foscarelli? Oh, Daisy. She was the delight of the house. Tonio, she called me. And she ये 12 बंदों ने मारा है she एक would बंदे को sit in the car and pretend to drive 12 me. बंदों ने And you, Mademoiselle Olson.
a champion for the immigrants, a worthy calling. Mademoiselle Olsen, you supported Madame Hubbard's story about her connecting door latch, a story that I later demonstrated to be impossible. So, you deliberately lied to me, and you also lied about Mademoiselle Debenham's whereabouts. मैं खाना खाता हूँ अगर गेम ना आता हूँ तो फिर मैं आ I can't जाऊँगा take this anymore. Okay, I know bye-bye. what you want from me, Mr. Poirot. Very well. Here it is. She was my little She Daisy. was my little Daisy. My angel. My angel. So patient. When I यार वैसे pushed देखो the जुल्म किया तो सब बेकार है डेजी 3 साल की बच्ची को मार के ऑब्वियसली ये तो मैं कहता हूं ठीक ही किया उन्होंने 12 बंदों ने 12 नहीं ज्यादा मार रहे 24 एक मार रहे चलिए 12 lakhs 2 in an ever darkening world. I've tried to honor her by caring for children who have मैं lost कहता everything. 2-3 चंडे ही मारते उसकी लाश को. Thank you, Mademoiselle Olsen. You too shed light on your part in this mystery. She was a nurse or Daisy? She was a nurse. You were Daisy Armstrong's nurse. I will ask you no more questions. It is enough that you have admitted what I know to be the truth, and I understand. Let's move on. Dr. Constantine. Dr. Constantine. You suspect me? I know none of these people. I didn't know Ratchet either, and I've taken a solemn oath to help people, not murder them. Now, really, Poirot, he has helped you get to the truth, not hidden it. पता कई दफा होता है ऐसे कि कुछ लोग जिन्होंने नहीं किया होता उन्होंने किया होता. It's true that doctors take the Hippocratic oath, but that is not enough to exonerate Dr. Constantine. You are one of the few people in this room not to have any connection भाई with हम the सस्पेक्ट नहीं कर रहे Armstrong टकले case. हम लोग तो सबको Moreover, बता रहे कौन ठीक है your कौन गलत है. हमें चीखें ना alibi मारो is बोचने confirmed वाले by को. Monsieur Book, whom I would trust with my life. That is very kindly said, my friend. We now come to Mademoiselle Debenham and Captain Arbuthnot, whose relationship was not in doubt from the moment I inspected your room at the hotel. You have a bloody nerve. Indeed, I do. We're getting married. Congratulations. But I would rather talk about your relationship to John Armstrong. Cook, which link to John Armstrong? Cousin, brother, driver, gardener, soldier, secretary, lover. Cousin लग रहा है, brother लग रहा है मुझे. This is wrong, but I'm never शक्ल इसकी far same from है. the truth. Cousin होगा फिर शक्ल same है यार. I must admit I'm not right this time. फिर क्या है ये उसका soldier में से होगा. Okay. That was easy. Colonel Captain था ना सच वो. Arbuthnot, you Nice, served nice, in nice, the yes. army with John Armstrong. What I don't understand is why a man your age is still a captain. One might expect you to be a colonel as well. Ever fought in a war, Poirot? It was war that first brought me to England. Then you know what it's like. There's a shattering sound, and death, and mistakes, acting on intelligence that proved to be wrong. I sent a patrol to their death. Good men, brave men, wasted. John testified on my behalf at a court-martial. I'm not a colonel. I don't deserve to be, you bloody fool. But I'm also not in prison. John remained my best friend until... He died? Until... There, you have my story. Understand now? Archie, calm down, please. You're right, Mary. What you see in me, I don't understand. Oh, Archie, I see in you what John saw. Miss Debenham, I'm sorry. My turn, is it? I'm afraid so. And you have caused me quite a puzzlement. Your connection with the Armstrong family was not obvious. Then I remembered the job you currently hold. नहीं सिस्टर थी नर्स थी गार्डन सेक्रेटरी थी मेरे ख्याल से. No, teacher थी फिर. Not good. अच्छा लिंक क्या है?
टीचर ओके या कपड़े भी टीचरों वाले ETF वाइसिटी वाला hey voila You were the teacher of No, she was the teacher of Countess Andreni. Okay, thank you. You were the teacher of Helena Andreni, whose maiden name was Helena Goldenbear before she married Count Andreni. Yes, absolutely. Why lie to you? She was an excellent student. Captain Arbuthnot. नहीं मारा यार क्या बंदा के No, Bravo. Unlike the train, you are on the wrong track. Oh, इसने मारा है nice. You had one of the strongest alibis, thanks to Mr. McQueen. चलो भाई But his testimony melted like a snowflake. There went your alibi. Poof. Unless you have another one. As for you, Mademoiselle Debenham, I do not think that's the right answer. दोनों ने मारा है nice. Yes, I remember overhearing Mademoiselle Debenham talking with the captain at Sirkechi station. She said, not now, when it's all over. That's significant in light of what we now know, but not enough to incriminate her. Mademoiselle Olsen was the only one who could confirm your alibi. I think you know where you stand. Very good, Mr. Poirot. Are you satisfied? I will be soon. Now I must turn to Sonia Armstrong's godmother, Princess Dragomirov. Princess Dragomirov, you weren't on my list of suspects at the start, given your social position. I left my social position in a cold country. Do you object to being addressed as Princess? I deny people the opportunity. It makes a good story to tell their friends. It also guarantees a good table in the best restaurants. Princess, there is also, forgive me, your extreme physical fragility. It does not stop me when I must be strong. Indeed. Of more importance, though, is the fact that you're the only left-handed person on the train. And the single blow to ratchet from a left-handed person was very, forgive me, weak. Finally, I'm afraid I know the alibi that you shared with Fraulein Schmidt is false. You have been very thorough, sir. I hope you will permit me to say we are much alike. I am honored. Now it is time to end with Mrs. Hubbard, or should I say... Think, Poirot, that is not a good answer. Linda Arden. If Princess Dragomirov hadn't told me about her relationship with this famous actress, I might not have made the connection. But you are a great actress, madame. Your performance as a flighty, self-involved woman was superb. I never would have guessed something entirely different. As for what ties you to the Armstrong family, it is obvious. My little grey cells did not let me down. Mrs. Hubbard, you are the mother of Sonia Armstrong and Mrs. Andreni. The fact that Madame Hubbard is actually Linda Arden, Sonia's mother, and a gifted actress of stage and screen, a woman who could teach her fellow conspirators how to play their roles, makes her one of the best placed to organize the murder, no, the execution
of Ratchet. But I need material proof. The fact that Mrs. Hubbard has direct access to Ratchet's room is no accident, but it does not incriminate her directly. Madame Hubbard, you really are a remarkable actress. You put so much effort into your character and into staging the murder. I saw it as a perfect mosaic, each person playing his or her allotted part, so carefully arranged that if suspicion should fall on any one person, the evidence of one or more of the others would clear the accused person and confuse the issue. Everything was meticulously planned. But you hadn't expected that Detective Locke and I would be on this train, and the avalanche would block it on the night of the murder. You had to improvise. But again, improvisation would be another of your skills as an actress. So you came up with the story that the latch on the door that communicated with Ratchet's compartment was hidden by the handbag. I always fancied myself in comedy parts. That slip about the sponge bag was silly. Shows you should always rehearse properly. You know all about it, Mr. Poirot. You're a very wonderful man, but even you can't quite imagine what it was like. That awful day, I was just crazy with grief. So were the servants. We decided then and there that the sentence of death that Ratchet had escaped had got to be carried out. There were 12 of us, or rather 11. Suzanne's father was over in France, of course. First we thought we'd draw lots as to who should do it, but in the end we decided on this way. It was the driver, Antonio, who suggested it. Mary worked out all the details later with Hector McQueen. It took a long time to perfect our plan. We first had to track Ratchet down. Hardman managed that in the end. Then we had to try and get Edward and Hector into his employment. Well, we managed that. Then we had a consultation with Suzanne's father. Captain Arbuthnot was very keen on having 12 of us. He seemed to think it made it more orderly. He didn't like the stabbing idea much, but he agreed that it did solve most of our difficulties. Well, Suzanne's father was willing. Suzanne had been his only child. We knew from Hector that Ratchet would be coming back from the east sooner or later by the Orient Express. With Pierre Michel actually working on that train, the chance was too good to be missed. My daughter's husband had to know, of course, and he insisted on coming on the train with her. Hector wrangled it so that Ratchet selected the right day for traveling when Michel would be on duty. And then, at the last minute, you came. For the rest of the story, you worked out everything, Mr. Poirot. You were right about all of us. What are you going to do about it? If it must all come out, can't you lay the blame upon me, and me only? I would have stabbed that man 12 times willingly. It wasn't only that he was responsible for my daughter's death, and her child's, and that of the other child who might have been alive and happy now. It was more than that. There had been other children kidnapped before Daisy, and there might be others in the future. Society had condemned him. We were only carrying out the sentence, but it's unnecessary to bring all these others into it, all these good, faithful souls. You are a director of the company, Monsieur Bouc. What do you say? In my opinion, Poirot, the first theory you put forward was the correct one. Decidedly so. I suggest that that is the solution we offer to the police. You agree, Doctor? Certainly, I agree. As regards the medical evidence, I think that I made one or two fantastic suggestions. Then, having placed my solution before you, I have the honor to retire from the case.
I'm sorry to wake you up in the middle of the night, Poirot, but it couldn't wait. There was a detail that bothered me in my preliminary autopsy of Ratchet's body. I went back to examine the body and I discovered a wound covered by another. The blow I hadn't seen was delivered by a thinner, sharper blade. So there were not 12, but 13 stab wounds. 12 stabs for 12 jurors. It doesn't work with 13 wounds. The symmetry is destroyed. It can't be one of the culprits who stabbed him twice? Doctor, a different knife was used. There is only one explanation. Somehow, some way, there is a 13th murderer on this train. We must tell Book. The case is not solved. Please, come in. Ah, Book. I see we are moving at last. Yes. The way was finally cleared while we slept. If all goes well, we will arrive in Venice this evening. The train will be there for several hours for refueling and reprovisioning. What do we do with the 13th murderer? Do you have a lead? I thought about it. There is one clue that was left aside in my investigation. The diary I found in Ratchet's safe mentioned an appointment in Venice. Someone with the initials AW. He will never keep the appointment. But there should be enough time. I must try to keep that appointment for him. No, not good. This is wrong. But I'm never far from the truth. I do not think that's the right... Think, Poirot. No, not good. I must admit I'm not right this time. I do not think that's the right answer. This is wrong. But I'm never... Think, Poirot. That is not... I'm right again. That happens to me a lot. I don't have time for small talk. I think we should let Ratchet rest in peace. How would it look to the police if I asked a suspected murderer for help? Doctor, a moment. Have you made arrangements for Ratchet's body? Yes, it will be collected by the Italian authorities when we reach Venice. The autopsy will be performed there. However, there is something odd. Oh? Since the train is French, jurisdiction must be shared. When I told them you were already on the scene, they have both agreed to support your investigation until we reach Paris. Ratchet's compartment will be sealed until we arrive there. All of those who conspired to kill Ratchet are to be confined to the train until then as well. So, thanks to you, I am the rope in a tug-of-war between two countries. Oh, but I thought you would want to be in charge. And isn't it odd we continue on our journey with a trainload of people that police consider potential murderers? Calm yourself, Doctor.
It is not the first time I find myself in the middle. And to be honest, I welcome the chance to see this case through. It is fast becoming one of the most challenging of my career. Assalamualaikum. I don't have time for small talk. यार आपके हेलो 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 भाई How would it look to the police if I asked a suspected murderer for help? I don't have time for small talk. How would it look to the police if I asked a suspected murderer for help? I don't have time for small talk. How would it look to the police if I asked a suspected murderer for help? I don't have time for small talk. I think we should let Ratchet rest in peace. How would... I don't have time for small talk. I'm not going to ask a murderer to help me catch himself. Would you be able to accompany me to Venice to follow a lead? I'm honored you asked me, my friend. I would have loved to help you. But I have to manage the situation here. I must make sure no one gets off the train in Venice and that Ratchet's body is transferred. So, my dear book, how does our journey progress? We are well on our way to Venice. All of our passengers are locked in their rooms by order of the authorities. I watch them when they want to stretch their legs, like the captain there behind you. I see that you have the situation well in hand. Mademoiselle Locke, you are clearly an excellent police officer. Could you accompany me to Venice for an investigation into Ratchet's activities? There is much we still need to know. Well, yes. It would be an honor to work with you. And I'm glad you trust me. What do you have in mind? There was a notation in Ratchet's appointment book. He had an appointment. With who? There were only the initials A.W. They were to meet at 10 o'clock at the Fontana dei Conigli. I want to know who Ratchet was meeting and why. But you've already discovered the 12 conspirators. Why is this meeting important? Unfortunately, the case is not complete. Dr. Constantine has discovered the presence of a 13th stab wound. One of them could have stabbed him twice. The wound was made with another, finer blade. Why would one of them have used 2 knives? Did they want to confess they killed him more than the others? And if so, why bother to deny it when they have already confessed? No, it makes no sense. And I do not close a case until all questions have been answered. You, of all people, must understand this. You're right. I do understand. I'll help you. Thank you. Together, we will uncover the truth. We will arrive in a few hours.
take the opportunity to rest. I slept well last night. No more effects of the drug. Excellent. Then be prepared when we reach Venice. We have another mystery to solve. This is the third embarking dock, and no gondoliers available at all. With Carnival, you can't find a gondolier to cross that damn canal. They're all booked. The worst thing is that the fountain is just across this canal. We're almost there. I see a gondolier just over there. What we do is on big screen like everybody can to see what it's all about. I don't be frontin', there's no acting with me. It's just all real. It's your boy. Yeah. Pull up on you like agency. देता असरात मनफी. तुझ में डर है, I can sense it. Left you bloody just menses. Fuck around till you come to your senses. मैं future और तू past tenses. लाजवाब you do not have the answers. तुम जैसे अफगानिस्तान में Americans. एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका. रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका. गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर. इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका. वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे. दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे. Who the fuck told you I was offended? मैं तो chill और ये beats पे चिल्ला रहे. Fucking visionary बेटा मुझे visions आ रहे. मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे. You a pussy तेरे ख्वाबों में चिड़े आ रहे. मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुंह चढ़ा रहे. इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहे. गला किसी प्यासे पुसी इसका सूखा ना रहे. किसी ऐरे गैरे को कोई गलत फहमी ना रहे. ये वो कैरेक्टर हैं जो कहानी में ही ना रहे. ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे. हम गहराई है और ये मैं है सिर्फ किनारे. हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से. मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से. I'd say मेरे में गुरूर नहीं, लेकिन आजकल ऑफ रहता मूड भी. रैप गेम का आतिफ लेट पहुंचे शूट पे. लौंडे सुने मेरे गाने करें उसकी स्क्रूटनी. आई स्क्रू अकेले तेरे